Today we are solving this paper, Mechanics, variant 4-3, May June 22. This is the paper. First question of this paper is from momentum, two particles P and Q of mass zero point 0.3 kg and 0.2 kg respectively are at rest on a smooth horizontal plane. P is projected at a speed of 4 meter per second directly towards Q. After P and Q collide, Q begins to move with a speed of 3 meter per second. Find the speed of P after the collision. This is a sketch for this question. This particle P, mass 0.3 kg. This particle is particle Q with mass 0.2 kg. P is projected at a speed of 4 meters per second. P is projected towards Q with initial speed उसको UP से represent कर लेते हैं. Initial speed of P before collision 4 meters per second, and we have to find the speed of P after the collision. We will represent with VP. The Q particle is at rest. UQ is equal to 0 and VQ is given, that is 3 meters per second. After the collision, speed of Q is 3 meters per second. Find the speed of P after the collision. We will use law of conservation of momentum. Law of conservation of momentum. Law of conservation of momentum. MP, momentum before collision will be equal to momentum after the collision. MPUP plus MQUQ is equal to MP VP plus MQVQ. Putting the values, mass of P is 0.3, initial speed, speed is 4, speed of Q is at rest, UQ is 0, so this becomes 0. MP 0.3, VP we have to find. Mass of MQ is 0.2 and VQ is 3. So after simplifying, we will get 1.2 is equal to 0.3 VP plus 0.6. We get 1.2 minus 0.6 is equal to 0.3 VP. From here, VP will be 2 meters per second. Now, for part second, B part, after the collision, Q moves directly toward the third particle R. Q moves toward after the collision, Q moves directly towards a third particle
आर। तो यहाँ हम आर शो कर लेते हैं कि दिस पार्टिकल इज आर ऑफ mass m kg, इसका mass है m kg, which is at rest, initial speed of this is 0, u r से represent करते हैं, which is at rest on the plane. The two particles q and r place on impact, q and r जो है वो place हो जाते हैं on impact and move with speed 2 मीटर पर सेकंड। दोनों की स्पीड कुलेस फॉर्म में वो स्पीड उनकी सेम होगी। आफ्टर द कोलिजन 2 मीटर पर सेकंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m। देखिए यहाँ पे q आ जाएगा, ये कोलाइड होके दिस इज q और ये कोलेस हो जाएंगे, इसको एक ही कंसीडर करेंगे। आफ्टर द कोलिजन और उसकी स्पीड आफ्टर द कोलिजन 2 मीटर पर सेकंड होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो यहाँ पे अगेन वी विल यूज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंबाइंड q एंड r की जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकंड है। तो अगेन यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एम क्यू यू क्यू प्लस एम आर। अब कोलिजन जो है क्यू और आर में हो रही है, एम आर यू आर इज इक्वल टू, अब क्यू और आर के मैसेज को हम ऐड करेंगे क्योंकि प्लेस हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, एम क्यू प्लस एम आर, और स्पीड दोनों की वो कंबाइंड होगी, सी ओ एम बी कंबाइंड, सी ओ एम बी फॉर कंबाइंड स्पीड। Now putting the value 0.2 is the mass of Q, 0.2 into 3 plus 0 because R is at rest। दोनों के मैसेज Q और R के मैसेज को ऐड करेंगे। Q का मैस 0.2 है, M वो हमने फाइंड करना है M, उसको एम आर एल ए मैस ऑफ आर, combined speed is 2, so simplifying we will get 0.6 is equal to 2 डिवाइड हो जाएगा 0.2 प्लस m और mass of r particle, तो we get ये 0.3 minus 0.2 is equal to m, so we get m of r particle will be 0.1 kg। This is the answer. Now question number 2, a particle p is projected vertically upward from horizontal ground। ये vertical motion है। The particle P is projected vertically upward from horizontal ground. This is the horizontal ground. Projected vertically upward. P reaches, this is particle P, vertically upward movement. Initial speed, we have to find this distance, highest, the maximum height of P reaches the maximum height 45 meters. At the highest point, speed will be 0, final speed is 0. After reaching the ground, P comes to rest without rebounding. Find the speed at which P is projected. We have to find this initial speed. So we can use since the particle
moves vertically upward, so the value of g will be negative acceleration due to gravity negative 10 meters per second square होगा. So we will use this equation Newton sorry ये equation of motion v square for constant acceleration ये होती है v square minus u square is equal to 2gs. Final speed 0, initial speed we have to find 2g की value -10 और s is 45 meters. So we get u square sin minus जाएंगे left right side पे 900 square taking square root each side we will get initial speed is 30 meters per second. This is the answer of this part. Now for part B, find the total time for which the speed of P is at least 10. Find the total time for which the speed of P is at least 10 meters per second. So at least 10 seconds upward और डाउनवर्ड दोनों के लिए हम स्पीड फाइंड करेंगे. एट लीस्ट स्पीड 10 जो है अपवर्ड के लिए भी यूज हो सकती है, अपवर्ड भी हो सकती है एट लीस्ट 10 और डाउनवर्ड के लिए भी. सो वन वे टाइम फाइंड कर लेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. फॉर अपवर्ड केस we use v is equal to u plus gt. Speed is 10, initial speed is 30, अभी फाइंड किया -10 into t. तो ये हमारे पास रहेगा 10 t is equal to 20 and t is equal to 2 seconds. This is time at least 10 मीटर पर सेकंड के लिए 2 सेकंड अपवर्ड के लिए यूज होंगे और इन केस ऑफ डाउनवर्ड वो एटलीस्ट स्पीड जो है वो भी 2 सेकंड होंगे. तो टोटल टाइम जो है हमारे पास total time for which the speed of p is at least 10 that will be 2 plus 2 that is 4 seconds. Next question number 3. Question number 3. Displacement time graph is given. The displacement of a particle moving in a straight line is s meter. At time t second after leaving a fixed point O, the particle starts from rest and passes through point P, Q and R. At time t is equal to 5, t is equal to 10 and t is equal to 15. यहाँ पे P, Q और मेंशन नहीं है, यहाँ पे ग्राफिकल पॉइंट गिवन है B, A, B, C. This means that and returns to O at time t is equal to 20 और t is equal to 20 पे वो रिटर्न करता है. वो आपको स्ट्रेट लाइन डी ई रिप्रेजेंट कर रही है. डिस्टेंस ओ पी ओ क्यू ओ आर 50 150 200 रिस्पेक्टिवली. तो ये डिस्टेंस दिए हुए हैं. तो इन पी क्यू और आर जो ओ पी ओ क्यू और ओ आर हैं उनको वो डिस्टेंस रिप्रेजेंट हो रहे हैं. तो डायग्राम शो द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है. वर्टिकल एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल पे टाइम है. विच मॉडल्स द मोशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम t is equal to 0 to 2 t is equal to 20. t 0 से 20 तक वो ग्राफ बने हुए है. दिस ग्राफ कंसिस्ट ऑफ टू कर्व्ड सेगमेंट ए बी एंड सी डी. ये देखिए ये कर्व्ड पार्ट है ए बी. AB segment is a curved, CD segment is curved, BC segment is a line, DE is also a line. Straight line, DE, BC are straight lines, CD is a curved part, EB is a curved part.
We have to find the speed of the particle when t is equal to 5 and t is equal to 10. t is equal to 5, t is equal to 10 पे आपने स्पीड फाइंड करनी है। तो OP इज गिवन, OP डिस्टेंस में गिवन है। OP is 50 meter, OQ is 150 meter, OR is 200 meter। ये गिवन है डिस्टेंसेस। तो अगर हम देखें 5 के अगेंस्ट वैल्यू जो है, 5 के अगेंस्ट वैल्यू हमारे पास आती है, ये डिस्टेंस जो है वो 50 है, तो 5 और 50 हमारे पास एक पॉइंट है। और 10 पे, यहाँ 10 के अगेंस्ट देखें, सी 10 पे सी है, टी इज इक्वल 10 पे सी है, और इसके वर्टिकल लाइन पे देखें वो वैल्यू दैट इज गिवन 150। तो दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं 10 150। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम में इसका ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो ग्रेडियंट होगा वो हमें स्पीड देगा। तो उसको फाइंड द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट हमारा आ जाएगा, वो ग्रेडियंट विल गिव अस अ स्पीड। तो ग्रेडियंट आएगा 150 y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो वी गेट 100 ओवर 5, दैट इज 20 meter per second. This is the answer. Now part B of this question is, find the acceleration of the particle between t is equal to 0, t is equal to 0 and t is equal to 5, given that it is constant. Acceleration is constant. This means that you can use three equations of motion. Find the acceleration of the particle between t is equal to 0 and t is equal to 5, given that it is constant, acceleration is constant। हमें acceleration फाइंड करना है। Initial speed is 0, and time is 5 seconds, and s is equal to 5 सेकंड में, ये देख रहे हैं आप 5 सेकंड में डिस्टेंस जो है हमारे पास, वो ग्राफ पे देख रहे हैं आप, 5 सेकंड में डिस्टेंस जो है वो 50 है। 5 सेकंड में डिस्टेंस जो है वो 50 है। तो अब हम ये 50 लिखेंगे और वी विल यूज दिस इक्वेशन, s is equal to ut plus half at square। s is 50, इनिशियल स्पीड is 0 प्लस 1 over 2 a हमने फाइंड करना है, और t स्क्वायर मीन 25 स्क्वायर, और 50 is equal to 1 over 2 a into 25। तो यहाँ से हमारे पास a जो है वो आ जाएगा 50 into 2 over 25, a will be 4 meter per second square। नेक्स्ट फाइंड द, या इसको हम दूसरी इक्वेशन से भी फाइंड कर सकते हैं, और बिकॉज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इससे भी फाइंड कर सकते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी फाइनल स्पीड इज 20, वहाँ पे स्पीड जो है वो 20 है। इनिशियल स्पीड इज
uh, t is equal to 0 to t is equal to 5. तो 20 है स्पीड 5 तक, वो हमने पहले पार्ट में फाइंड कर लिया। इनिशियल स्पीड इज 0, एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है, और टाइम इज 5, तो 5 is equal to 20, और फ्रॉम हेयर we can find acceleration 4 meter per second square. In both cases, the answer is correct. Now, next part, find the average speed of the particle during its motion. एवरेज स्पीड जो है उसको v एवरेज लिख लेते हैं, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। ये फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस जो है वो हमारे पास आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी जी प्लस डी ई, टोटल डिस्टेंस है, और टोटल टाइम इज क्लियरली 20 सेकेंड। एवरेज स्पीड हमारे पास आएगी ए बी एस 50 प्लस 100 प्लस सी डी एस 50 डी ई एस 200 divided by 20, so this becomes 400 over 20, that is equal to 20 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी एवरेज स्पीड आई है, वी एवरेज।